Good morning, students. Myself, B.S. Chauhan from Indo-Bharat International Public School. Now, for class 9. Now, today we discuss about the new chapter, chapter number 3. Chapter 3, the name of this chapter is Coordinate Geometry. Coordinates Geometry. This chapter actually is very important because in this class only we introduce what is called the geometry, coordinate geometry, and after that we discuss in the class 10. Now, what is the introduction of coordinates? Here this board is the two-dimensional figure because it is a rectangular figure, because their length is given and breadth is given. Some figures are two-dimensional, some are three-dimensional, but here we discuss only about the two-dimensional. Two-dimensional, their one dimension is the horizontal and second is vertically. The one line is this line is the horizontal line and this line is the vertical line. And in this plane, suppose we draw any position of a point. Before it, first we introduce these two dimensional. With two dimensional intersect, suppose this is the horizontal and it is the vertical. So in short, we introduce horizontal line is always called x-o-x days. X-o-x days. This is called x-axis. And vertical line y-o-y dash, where y-o-y dash means y-axis. इनकी पहचान के लिए हम इनको नेमिंग करते हैं x axis and y axis. X axis means horizontal and y axis means vertical line. And both the lines are intersect at the point O, and this point O is called origin. The name of this point is origin. And coordinates of this point is always 0, 0. Because here position of x and y both are equal to 0. And this side is the positive for x-axis and this side is the negative for x-axis. Similarly, for y-axis, on upward it is the positive side and on downward it is the negative side. In graphically, suppose we take the position of, suppose 1, 2, 3, 4 and similarly, and here you take the coordinates of -1, -2, -3, -4 and then, and for y-axis 1, 2, 3, 4, 5 and here -1, -2, -3, -4 and -5 and then similarly. These two axes divide the whole plane in 4 parts. 1, 2, 3, 4. First, these two parts, suppose we move in this direction. This direction is called the anti-clockwise direction. And this anti-clockwise direction, it is the positive direction for coordinate system. And this direction is called clockwise direction, that is called negative direction in coordinate system. Okay? So first we start from this one. So it is called the first quadrant because they are
whole part is called the quadrant. Quadrant means 1/4 part. So there are 4 parts, 1, 2, 3, 4. All parts are equal. And each part is called quadrant. Quadrant. Quadrant, that means 1/4 of whole part. It is the first quadrant, it is the second quadrant, it is the third quadrant, and it is the fourth quadrant. First quadrant, second quadrant, third quadrant, and fourth quadrant. Now, what is the sign of coordinates in these all 4 quadrants? In first quadrant, both coordinates are positive. And suppose, draw the point position of 2, 3. साथ साथ में मैं इनकी पोजीशन भी बताता जाता हूँ आपको ताकि क्लियर हो जाए. 2 and 3 both are positive. So start from always origin point. 2, 1 and 2 and 3 on the y-axis on positive direction. 1, 2, 3. This coordinate is coordinates of 2, 3. Both are positive. So always in first quadrant coordinate system, in coordinate system, both coordinates are plus, comma plus. In second, first is negative but second is positive. For example, same we take the minus 2, 3. This time start from origin, but this time is the first coordinate is the negative. So minus 1, minus 2. But second is the plus 3. 1, 2, 3. This coordinate is minus 2, 3. And third quadrant, both coordinates are negative. Positive, positive, negative, negative. And suppose minus 2 and minus 3. So here minus 2 and here minus 3. This coordinates is minus 2, minus 3. And in last fourth quadrant, plus, minus, plus and minus, plus and minus. Means this time first positive and second is negative. So first 1 and 2 and negative is this one. This point is 2, minus 3. Now we repeat that this whole system is called the coordinate system. This whole system is called the two-dimensional figure. This whole system is called the rectangular system. Also, we say this system is called the rectangular system because they are only length and breadth are given. They are only two-dimensional figure, x-axis and y-axis. Both axes are intersect at the point O, where O is called the origin and it is called the x-axis. And x dash is the negative direction, x is the positive direction, y dash, it is the y-axis, y is the positive direction and y dash is the negative direction. And you take the any according to graph, according to the given coordinate, you take the units, 1 unit, 2 unit, 3 unit, 4 unit, maybe 1 centimeter, 2 centimeter, 3 centimeter, 1 meter, 2 meter, जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जिस हिसाब से कोऑर्डिनेट्स आपको ड्रॉ करने हो उसके अकॉर्डिंग. 9th क्लास में अभी अपन केवल अपन यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स को रीड करना अपन पढ़ रहे हैं और एक अपन कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करना. प्लॉटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑन द कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड रीड द कोऑर्डिनेट्स इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो हाउ कैन बी प्लॉटिंग. प्लॉटिंग तो मैंने आपको बता ही दिया है. 2, 3 आपको किस तरह से प्लॉट करना है इजीली. और अगर रीड करना है तो रीड के लिए आपको सिंपली आप जैसे सपोज इसी को रीड करना चाहें तो आपको कुछ नहीं करना है. ड्रॉ द परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दिस टू परपेंडिकुलर. एंड आपको ये देखना है कि ये परपेंडिकुलर लाइन कहाँ आ रही है +2 एंड यहाँ पर ये परपेंडिकुलर लाइन कहाँ आ रही है +3. तो दैट मीन्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट इज 2, 3. You can easily find the coordinates of any point when only position of point is given in the rectangular system. Okay. O is called origin point and coordinates of origin is always
O comma O, and each part is called the quadrant. First quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. आपको हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की पोजीशन में चलना है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है वही पॉजिटिव डायरेक्शन है, इसलिए अपन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इन फर्स्ट प्लस कॉमा प्लस, both coordinates are positive. In second, minus plus, and in third, both are negative, 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 and in fourth, plus comma minus. First is positive, second is negative. ये आपको orally याद रखना है, क्योंकि oral questions के अंदर आपको 1 मार्क के क्वेश्चन MCQs के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इजीली। देखा जाए तो मैंने ये पूरा होल चैप्टर्स कंप्लीट करवा दिया है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। अभी आपके सिलेबस में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसके अंदर केवल इसका इंट्रोडक्शन है, जो इंट्रोडक्शन मैंने आपको करवाया। इसमें अगर कुछ छूटता है तो अपन देखते हैं, अदरवाइज मैंने ये कंप्लीट करवा दिया। इट इज द क्लियर मीनिंग ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ऑरिजिन, प्लॉटिंग द कोऑर्डिनेट्स। कोई भी कोऑर्डिनेट्स आप प्लॉट कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, माइनस सपोज 3, -4, अगर आपको ये पॉइंट प्लॉट करना है तो आप कैसे प्लॉट करेंगे? आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट -3, तो -3, -1, -2, -3 एंड -4, सो -1, -2, -3 एंड -4। दिस पॉइंट इज द -3, -4। अगर आपको कहीं पे अगर आपको पॉइंट गिवन हो और अगर आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हो तो आप क्या करेंगे? यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑन एक्स एक्सिस एंड ऑन वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे जो भी वैल्यूज हैं और वाई एक्सिस पे जो भी वैल्यूज आती हैं वही उसके कोऑर्डिनेट्स बन जाते हैं। मींस फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ 5 है, तो सपोज इट इज द 5 एंड 8 इज द -2, तो इट इज द -2, तो प्लस 5, -2 दिस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट। फाइनली ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। दिस चैप्टर इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसको अपन रेक्टेंगुलर सिस्टम भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट, आज मैं इस क्लास को यहीं ऑफ करता हूँ। थैंक यू एंड गुड डे।